Shri Ramakrishnaaya Namaha, Shri Shardambikaya Namaha, Shri Matre Namaha. The names we chant today awaken the goddess within, softly dissolving self doubt, negative attachments, and lethargy, and gracing us with a renewed spiritual flow. Namaskar and welcome to day 15 of the sacred 100-day journey into the Lalita Sahasranamam, where we learn the pronunciation and meaning of the 1,000 names of the Divine Mother, one name at a time. Today, we will learn names 74 to 83. Sit comfortably and repeat along with me. Let us begin. Bhandaputra Vadhodyukta Bala Vikrama Nandita. She who rejoices in the valor of Bala, who is engaged in slaying the sons of Bhandasur, जो भंडासुर के पुत्रों के वध में प्रवृत्त बाल देवी के पराक्रम से प्रसन्न है। भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता। भंड पुत्र वधोद्युक्त बाला विक्रमनंदिता। It would be interesting to note that the sons of Pandasura, 30 in number, represent the 30 limitations, sins, and mental impurities that bind the human soul. Bala refers to Bala Tripura Sundari, the 9-year youthful form of the Divine Mother, who embodies innocence, non-duality, and the purest absolute form of spiritual power, who slayed the 30 sons of Pandasur. भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता। मन्त्रिण्यम्बा विरचित विशङ्ग वध तोषिता. She was pleased by the slaying of Vishanga performed by Mantrini Amba, जो मंत्रिणी अम्बा द्वारा किए गए विशंग के वध से प्रसन्न है। मन्त्रिण्यम्बा विरचित विशङ्ग वधतोषिता। मन्त्रिण्यम्बा विरचित विशङ्ग वधतोषिता. Vishanga is the younger brother of the demon Bhandasura, who served as the primary commander in the cosmic war against goddess Lalita Tripura Sundari. Vishanga represents the unhealthy clinging or attachment to sensory pleasures and ego. Mantrini is the chief minister in the celestial court of the supreme goddess Lalita. She represents the divine power of speech, inner thought, and the mastery of music. She slayed Vishanga. Mantrinyamba virachita Vishanga vadhatoshita. Vishukra pranharana Varahi Virya Nandita. She who rejoices in the valor of Varahi, who destroyed Vishukra, Bhandasura's brother. जो वाराही द्वारा विशुक्र के प्राण हरण के पराक्रम से प्रसन्न है। विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदिता। विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनंदिता. Vishukra is the younger brother of Bhandasur, who represents the draining of the vital force through carnal desires and sensory distractions. Varahi is the commander of the mother's forces, who represents discipline and the control of senses, who slayed Vishukra. विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्यनंदिता. कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा. She who created Sri Ganesha after
merely glancing at Kameshwara's face, जो कामेश्वर के मुख के आलोक से श्री गणेश की उत्पत्ति कराने वाली है। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा, कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा, कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। महा गणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता। She who rejoices as Mahaganesha shatters the Vigna Yantra, जो महागणेश द्वारा विघ्न यंत्र के भेदन से अत्यंत प्रसन्न है। महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता, महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता। Vigna Yantra was a weapon of dark magic and psychological warfare used by the demon Vishukra, who was a brother of Bhandasur. The weapon caused extreme lethargy, internal conflict, and mental decay among the goddess's army, which Mahaganesh eventually shattered. Mahaganesh nirbhinna Vigna Yantra Praharshita, Bhanda Surendra Nirmukta Shastra Pratyastra Varshini, she who shars counter weapons against the weapons released by Bhandasur, जो भंडासुर के शस्त्रों के प्रत्युत्तर में प्रत्यस्त्रों की वर्षा करती हैं। भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी, भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी, भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी। करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृत ही, she whose fingernails emerged the 10 incarnations of Narayan, जिनकी उंगलियों के नखों से नारायण के 10 अवतार प्रकट हुए हैं। करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति, करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति। महा पाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका, she who burned the army of demons with the fire of Mahapashupata weapon, जो महापाशुपतास्त्र की अग्नि से असुर सेना को भस्म करने वाली है। महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका, महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका। The Mahapashupatastra, in a sense, burns the Pashutva, the lower primal tendencies like lust, greed, anger, thereby freeing the bound soul to unite with Pashupati, the Supreme Lord. Mahapashupatastragni Nirdagdhasura Sainika, Kameshwarastra Nirdagdha Sabhandasura Shunyaka, she who by the Kameshwarastra reduced Bhandasur along with his city
शून्यका to ashes, जो कामेश्वरास्त्र द्वारा भंडासुर सहित उसकी शून्यका नगरी को भस्म कर देने वाली है। कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका, कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका, कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभंडासुर शून्यका, ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा, she whose glory is praised by Brahma, Vishnu, Indra and other gods, जिनके वैभव की स्तुति ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देव करते हैं। ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा, ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा, ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा। Today we have learned names 74 to 83. Let us revisit the pronunciation of all the names and verses we have learned today. Bhandaputra vadhodyukta Bala Vikramanandita Mantrinyamba Virajita Vishanga Vadhatoshita Vishukra Pranaharana Varahi Viryanandita Kameshwara Mukhaloka Kalpita Shri Ganeshwara Mahaganesha Nirbhinna Vighna-yantra-praharshita Bhanda-surendra-nirmukta Shastra-pratyastra-varshini Karanguli-nakhotpanna Narayana-dashakrutahi Mahapashupatastragni Nirdagdha-surasainika कामेश्वरास्त्र-निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र-महेन्द्रादि देवसंस्तुतवैभवा. This brings us to the end of our day 15 learning. The separate video with all the names learned so far is available on the channel. Please click on the link to revisit and reflect on the names learned so far. Thank you for being a part of this journey. May we offer the knowledge gained and the ignorance that still remains at the feet of the Divine Mother. I will meet you in the next video. Shri Matre Namaha. Om Namah Shivaya.